Going to discuss about ketones. In previous lecture, we already studied that the general formula for the aldehyde is R dash C double bond O single bond H. One of the hydrogen atom of this formyl group or aldehydic group is replaced by an alkyl group. Then the newly formed compounds are called as ketones. Ketones have simply the functional group itself as a carbonyl group, that is C double bond O. So let us we discuss about the definition of ketones. As we know that aldehydes are nothing but R dash CHO having the general formula. One of the hydrogen atom of this formyl group or aldehydic group is replaced by an alkyl group. Then there is a formation of corresponding carbonyl compound, and that is called as ketone. So the systematic definition of ketone is the alkyl derivatives of aldehydes. The alkyl derivatives of aldehydes are called as ketones. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ अल्डिहाइड में का तो कीटोन फॉर्म हो रहा. इसका मतलब क्या है कि अल्किल ग्रुप ऐड करने के बाद अल्डिहाइड के हाइड्रोजन को अल्किल ग्रुप से रिप्लेस करने के बाद कीटोन बनता है. सिंपली द डेफिनेशन शुड बी ऑफ द कीटोन शुड बी द alkyl derivatives of aldehydes are called as ketone. This is the first definition. Suppose there is a secondary alcohol having general formula as like this. This is a secondary alcohol. When the secondary alcohol is to be oxidized under a suitable oxidizing agent, it may be the acidified KMnO4 or acidified K2Cr2O7 will be the oxidizing agent. Then what happens? Simply there is a shifting of this bond, and now this H minus and this H plus along with divalent nascent oxygen, there is a removal of water, and now the above compound become RC double bond O. No doubt this is the general formula for ketone, so it is a ketone. So how you have to define it? The oxidation products of कौन है ये? सेकेंडरी अल्कोहल है. सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज कीटोन. व्हाट? द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल आर कॉल्ड एज कीटोन्स. ये हो गया सेकेंड डेफिनेशन. पहला डेफिनेशन हमने बताया अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड एज कीटोन. सेकंड डेफिनेशन कीटोन का क्या बताएंगे? द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज कीटोन. थर्ड सिंपल सा डेफिनेशन है, वेरी वन लाइन डेफिनेशन है, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन C double bond O group, that is carbonyl group itself as a functional group, are called as ketone. तो तीन डेफिनेशन हुआ. कौन सा? The alkyl derivatives of aldehydes are called as ketone. The oxidation products of secondary alcohols are called as ketone. Or the organic compound which contain C double bond O group, that is carbonyl group as a functional group, are called as ketones. You know, understood? अब देखो हम कीटोन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. जैसा कि हमने ईथर के अंदर देखा. क्या देखा ईथर के बारे में? ईथर के दो टाइप देखे हमने. वो दो टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप थे. ठीक उसी तरह अल्काइल ग्रुप के नेचर से कीटोन को भी क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन ब्रॉडली द कीटोन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दोज आर एलिफैटिक कीटोन्स एंड सेकेंड क्लास इज एरोमेटिक कीटोन्स. देखो फ्रेंड्स, एलिफैटिक कीटोन्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स, these are the two main classes of ketone. How the aliphatic ketones are to be defined? See, when ketone carry two exactly same, देखो यहाँ पर ये जनरल फार्मूला, what it can represent? Two exactly same alkyl group. यहाँ they contain, देखो एक R है दूसरा R dash है, यानी कि both are different, they are not same, non-identical one. यानी कि aliphatic ketones are those ketones in which two same or different alkyl groups or aliphatic groups are attached to the carbonyl carbon. इसे हम carbonyl carbon कहेंगे. Carbonyl carbon are called as, बोलो क्या बोलना? Are called as aliphatic ketones. इसके अंदर each and every carbon of this alkyl group undergo sp3 hybridization. In aliphatic ketones,
these alkyl group carbons are sp3 hybridized. And second class is aromatic ketone. उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि अगर कीटोन को एटलीस्ट वन, कम से कम एक, या दोनों के दोनों अराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप अटैच है, तो ऐसे कीटोन्स को कौन से कीटोन बोलना? एरोमेटिक कीटोन. तो इसका डेफिनेशन कैसा कहेंगे हम? एरोमेटिक कीटोन्स आर द कीटोन्स which contain or which carry at least one or two aryl or aromatic groups directly attaches to the carbonyl carbon are called as aromatic ketones. And aliphatic ketones are those ketones in which two same or two different alkyl group or aliphatic groups are attached to the carbonyl carbon are called as aliphatic ketones. In case of aliphatic ketones, the carbonyl carbon, this carbon, which may called carbonyl carbon, directly attaches to sp3 hybridized carbon atom of aliphatic group. And in case of aromatic ketones, this carbonyl carbon is attached to, see, this is a aromatic ring having alternate single and double bond, pi resonance system. Okay, so this carbon to which the carbonyl group is attached, this carbon undergo sp2 hybridization. Similarly, this carbon is sp2 hybridized, this carbon is also sp2 hybridized. तो sp2 hybridized कार्बन्स को डायरेक्टली हमारा कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है एरोमेटिक कीटोन्स के अंदर. एलिफैटिक कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल कार्बन शुड अटैचेस टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलिफैटिक और अल्काइल ग्रुप्स. क्लियर? Itself this general formula indicate what? Indicate the another type of classification. ये हो गया depending upon the nature of carbon skeleton, whether it is aliphatic or aromatic. There are two types of ketone, as aliphatic ketone and aromatic ketone. But aliphatic and aromatic ketone are commonly divided into two subtypes. Those are simple ketones. Simple ketones. And second one is mixed ketones. See friends, simple ketones are also called as symmetrical ketones and mixed ketones are also called as unsymmetrical ketones. जैसे कि हमने ईथर में देखा, अगर दो एग्जैक्टली सेम अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच है तो उसे हमने सिंपल ईथर कहा था. सेम उसी तरह अगर कार्बोनिल कार्बन, कीटोन के अंदर का ही जो कार्बोनिल कार्बन है, जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, उसको अगर टू एग्जैक्टली सेम अल्काइल या टू एग्जैक्टली सेम, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर टू एग्जैक्टली सेम अराइल और एरोमेटिक ग्रुप कार्बोनिल कार्बन को अटैच है, तो ऐसे टाइप ऑफ कीटोन्स को हम क्या कहेंगे? सिंपल कीटोन्स या सिमेट्रिकल कीटोन्स. सिंपल कीटोन्स या सिमेट्रिकल कीटोन. एंड द कीटोन्स इन विच टू डिफरेंट और नॉन आइडेंटिकल अल्काइल और वन अल्काइल और वन अराइल, वन अल्काइल ग्रुप और वन अराइल ग्रुप, yeah, both of the aryl group but they are different aryl groups, aromatic groups are attached. Such type of ketones are called as mixed ketones or unsymmetrical ketones. ये किस पे डिपेंड है? अल्काइल या अराइल ग्रुप का नेचर. अगर दोनों भी एग्जैक्टली सेम अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप कीटोन को अटैच है तो उसे सिंपल कीटोन कहेंगे. अगर डिफरेंट अल्काइल या अराइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन को अटैच है तो ऐसे कीटोन्स को क्या कहना? मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन. सो दिस इज रिगार्डिंग विद the detailed classification of our ketone. दो मेन टाइप है, aliphatic ketone and aromatic ketone. Aliphatic and aromatic, both of these main kind of ketones are again further divided into, classified into two subtypes. Those are simple ketones and mixed ketone, depending upon the nature of alkyl and aryl group. For example, simple ketone का अगर हम example देखेंगे तो as per the definition, CH3 C double bond O single bond CH3. देखो, this example indicate these two methyl groups, so dimethyl are attached to the carbonyl carbon, so simply ketone. So dimethyl ketone, it is a simple ketone. Another suppose a C2H5, C double bond O single bond C2H5. As you know, C2H5 group is a ethyl group, so the name of this compound is diethyl ketone. Suppose both of the aromatic rings, aromatic groups are attached, identical aromatic groups are attached, then such type of aromatic ketone come under simple ketone family. So the name of this ketone is diphenyl ketone. Whatever it may the IUPAC name, common name, we will study later on. But first of all, some examples we have to taken here regarding with your simple ketone. Just you have to clarify your idea
about the definition of simple ketone, as exactly two same alkyl or aryl groups are attached to the carbonyl carbon, ketonic carbon, then such type of ketones are called as simple ketone. These are nothing but the examples of simple ketone. Understood? Clear? Now the second class is mixed ketone. We already discussed. The mixed ketones are those ketones in which two different non-identical alkyl or aryl, one aryl or one alkyl group may attaches to the carbonyl carbon. Example के तौर पर हम यहाँ पर कुछ compound का study करेंगे. See, this is a C2H5 group called as ethyl group. This is a CS3 called methyl group. Both are not same. They are non-identical. They are dissimilar. They are different alkyl group attaches to the carbonyl carbon. So the name should be ethyl methyl ketone as per the common name system. The alphabetical order between the names of two different alkyl groups should be followed. So ethyl का E पहले आएगा अल्फाबेट्स के अंदर, इसलिए उसका नाम पहले लिखो. So ethyl methyl ketone, as both alkyl groups are non-similar, they are different ones. So it is a example of mixed ketone. Here, suppose we attach C3H7. You know C3H7 is a propyl group. So the name of this compound is ethyl propyl ketone. Here, suppose a CS3 group, one aliphatic, one aromatic. So it is also mixed ketone. The name of this is alphabetical order should follow. That is methyl or methyl phenyl ketone. Clear? This is regarding with mixed ketones. मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल से हमारे क्लासिफिकेशन के सभी आइडियाज हमने क्लियर किए हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. Tomorrow we will discuss about detailed nomenclature methods of ketones.